We are solving today this paper mechanics, paper 4-1, May June 2022. First question of this paper is: the car starts from rest and moves in a straight line with constant acceleration for a distance of 200 meters, reaching a speed of 25 meters per second. The car then travels at the speed for 400 meters before deaccelerating uniformly to rest over a period of 5 seconds. This question is from kinematics of motion in a straight line. We have to find part A, find the time for which the car is accelerating. First we sketch this. This is a sketch for this part, speed time graph. Along x-axis time in seconds, along y-axis there is speed. This is the origin. Start from rest means speed is 0 with constant acceleration for a distance of 200 meters. This is a constant acceleration for time t, suppose reaching a speed 25. यहाँ पे स्पीड इसकी 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है. The car then travels at this speed for 400 meters. Speed is constant for 400 meters before deaccelerating uniformly to a rest over a period of 5 seconds. Then deaccelerate. ये हमारा स्केच बन गया. Now find the time for which the car is accelerating. A car is accelerating from 0 to t सेकेंड. ये देखें यहाँ ये लाइन जो है ये शो कर रही है कि कार इज एक्सेलरेटिंग. तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर दिस इज टू फॉर टाइम टी डिस्टेंस इज कवर्ड 200 मीटर. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये 200 मीटर है. तो वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर विच द कार इज एक्सेलरेटिंग. ये हमने टी टाइम फाइंड करना है. तो डिस्टेंस कवर्ड when accelerating, the distance is 200 meters, but in speed time graph we find the distance area under the graph. So we will find the area of this triangle which will be equal to 200. This is a right angle triangle, तो हम area find करेंगे 1/2 base into height. Base is this 0 to 2 t. T is the base and height is 25. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 over 25 is equal to t. So we get t is equal to 16 सेकेंड. तो ये हमारा आंसर है. t is equal to 16 सेकेंड. तो फॉर द नेक्स्ट पार्ट बी, sketch the velocity time graph for the motion of the car showing the key points. Important features of the graph are called key points. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे रीडिंग को शो करना, इंपॉर्टेंट रीडिंग्स को शो करना, वो की पॉइंट्स होंगे इसके. इसलिए स्केच करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन. दिस इज द वेलोसिटी
वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा, टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट दिस एक्सेलरेट for 25 meter per second, 0 to 25 meter per second. The car accelerates. This reading is 25. Next, travels with constant speed. अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइम जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। When speed is 25, time is 16. We have found this in part A. This is a constant speed. Suppose this time is t. यहाँ पे रीडिंग जो है वो t है, सपोज करें। Then accelerate, deaccelerate, तो ये डीएक्सलेशन को शो कर रही है ये लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर डीएक्सलेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास रीडिंग जो होगी ये t+5 होगी। तो सो हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये शो हो गया है। तो दिस डिस्टेंस इज 400 मीटर। 16 to t, this is 400 meter. We find these values. 400 meters distance, now we can show the area of this rectangle is 400 meters. Area of rectangle will be, from here we will find the value of capital T. Area of this rectangle will be T minus 16 into 25 is equal to 400. From here T minus 16 is equal to 400 over 25. T minus 16 ये हमारे पास आ जाएगा 16. 400 over 25 is 16. So we get T is equal to 32. So this T is 32 and then T plus 5 means 37. This reading is 37. This reading is 32. These are the key points. Now next part of this question is find the average speed of the car during its motion. एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास इस ट्रेपीजियम का एरिया हम फाइंड करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। टोटल टाइम हमारे पास 37 सेकेंड है। तो सो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हमने फाइंड करना है।
तो वो हमें डिस्टेंस दे देगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 sum of parallel sides 37 plus 32 minus 16, that is 16 into 25. The distance between the parallel sides is 25. Now after calculating we will get 662.5. This is the distance, total distance. Now average speed, total distance over total time, 662.5 over total time is 37 from the graph. We get 17.9 meter per second. This is the average speed of the car. Now next question number 2. Two particles P and Q of masses 0.5 kg and 0.3 kg respectively are connected by a light in extensible string. The string is taut and P is vertically above Q. A force of magnitude 10 Newton is applied to P vertically upward. The diagram of this question is this particle is P. This is Q particle, 0.5 kg mass of P, 0.3 kg mass of Q. The string is taut and P is vertically above Q. A force of magnitude 10 Newton is applied to P. 10 Newton force is applied on P. This is 10 Newton force. The weight acting vertically downward, weight of this particle is 0.3 g. Tension towards pulley, but the direction of the tension on particle P is downward because इस पे अपवर्ड फोर्स एक एडिशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो टेंशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी. तो सो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट फॉर पार्टिकल P, टेन अपवर्ड फोर्स 10 माइनस 0.5 g डाउनवर्ड वेट माइनस t इज इक्वल टू ma. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 माइनस जी की वैल्यू 10, 10 माइनस 5 माइनस टी इज इक्वल टू ma. यहाँ से 5 माइनस टी जो है वो 0.5 ए आ जाएगा. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर पार्टिकल Q इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, यहाँ हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फॉर पार्टिकल Q
t minus 0.3 g is equal to ma. T minus 3 is equal to ma. This is equation number 2. Now solving 1 and 2. Equation number 1 and 2 को solve करेंगे. 5 minus t is equal to 0.5a. T minus 3 is equal to 0.3a. When adding, we cancel out. तो हमारे पास रह जाएगा 2. 5 minus 3, 2 is equal to 0.8a. राइट साइड को ऐड कर दिया तो फ्रॉम हियर a is equal to 2 over 0.8. We get 2.5 meter per second square. This is acceleration. Now putting the value of acceleration in equation number 2. Equation number 2. T is equal to किसी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, वही टेंशन की वैल्यू आएगी. T is equal to 3 plus 0.3a. Putting the value of a, T will be 3 plus 0.3 into 2.5. This shows that the value of T is 3.75 Newton. This is the answer. ये क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में से था. न्यूटन सेकंड लॉ यूज किया तो ये हमारे पास इसकी दोनों वैल्यूज एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड कर लिए. फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेटमेंट इज a crate of mass 300 kg is at rest on rough horizontal ground. This is the rough horizontal ground. This is a crate. Mass of this crate is 300 kg. Surface is rough. The crate is at rest. The coefficient of friction between the crate and the ground is 0.5. This means that mu is equal to 0.5. A force of magnitude x Newton acting at an angle of alpha above the horizontal is applied to the crate when sin alpha is equal to 0.28. So this is the force x making an angle alpha with the horizontal. This angle will be alpha. Now the forces acting on, all the forces acting on this system are weight vertically downward 300 g. Reaction of the plane on the crate is R. Force of resistive force, force of friction which opposes the motion of the crate, F is equal to mu r. यहाँ पे आप mu r भी लिख सकते हैं, F small भी लिख सकते हैं. And the components, next the component of x along the plane and perpendicular to the plane. इसको resolve करेंगे. ये component along the plane और this component is perpendicular to the plane. The components x sin alpha, x cos alpha. The value of sin alpha is given. No need to find the value of alpha. Sin inverse 0.28 ऐसे करके अल्फा आपने नहीं फाइंड करना, क्योंकि अल्फा, साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू कंपोनेंट्स में डायरेक्ट यूज होती है. तो इसलिए आपने साइन अल्फा की वैल्यू और कॉज अल्फा की वैल्यू ही वहाँ पे यूज कर दी है.
तो ये हम एक ट्राइंगल से फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 0.28 दी हुई है, तो ये एक ट्राइंगल बना के हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज अल्फा, साइन अल्फा 0.28 है, दिस मीन्स 28/100 perpendicular over hypotenuse, third side must be a 96 पाइथागोरस थ्योरम से। तो फ्रॉम हेयर now, since the crate is at rest, तो acceleration is 0, तो horizontal component x cos alpha minus mu r is equal to 0 x, or from this triangle cos alpha is 96 base over hypotenuse, 96/100 minus mu is given, that is 0.5। अभी r हमने फाइंड करना है। और देखिए ये इस डायग्राम में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स साइन अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू 300 जी। तो और हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पुट करने के लिए आर प्लस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 300 जी। फ्रॉम हेयर आर विल बी 300 जी minus x sin alpha, the value of sin alpha is given, that is 0.28। तो यहाँ से हमारे पास ये r हमारे पास आ गया है 300 3000, इसको कह लें हम 3000 जी की वैल्यू 10 होती है, तो 3000 minus 0.28 x, तो putting the value here, x 96/100 minus 0.5, r is 3000 minus 0.28 x is equal to 0। तो we get 0 point, इसको 96/100 को पॉइंट में लिख लेते हैं, 0.96 x माइनस ब्रैकेट से वो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को, माइनस 1500 प्लस 1 पॉइंट सॉरी 0.14 x इज इक्वल टू 0। 0.96 x और 0.14 x उन दोनों को ऐड करके वो हम वी गेट 1.1 x is equal to 1500। from here x is equal to 1500 divided by 1.1, we get x is equal to 1363.3। the final answer will be in three significant figure 1360।